Hello, everyone, and welcome to the Hindu editorial analysis. I'm Vaishnavi, and this is presented to you by Unacademy. I hope you can see and hear me. Let me just check that, and then we will start. Today, we are taking comparatively the passage that we have taken, the editorial that we have taken is comparatively easier. Um, all right. So I have Sunil. आज टाइम Hello Aditya, hi Hivan, salutations Triranga. Hi Triranga, where were you yesterday? Vedika, hi. Harshika, hi. Hello, hello, hello. Shreya, hi. Rita, yes, tell me. Good afternoon, Vedika. Dhananjay, good afternoon. Mehak, good afternoon. All right, so am sure now that I'm visible and clearly audible. Um, Doing quite great, Hivan. I think generally Monday to Saturdays are so busy that I don't even get time to feel or think about how am I doing. But I think good, manageable. How are you doing, Hivan? Yesterday I was collecting my mark sheet, migration, and other documents. Okay, Triranga. Sunil, I know you, but I don't know you. All right, I'll take that. Okay, Sunil. Alpesh, good afternoon. Hello, Anmesh. So, good afternoon. Rita is just happy that I'm time paid today. Oh God. That sort of impression I've created, huh? Never on time. Rekha, hi, good afternoon. Alpesh or Vedika or Hivan, any one of you, could you please inform it on the group that I am live? Oh, thank you, Rita. Today is going to be very, very simple, and words are also very simple that we are going to be discussing. I think we'll be done within an hour or so. That's what I say every time, but exceeds 1 hour. Hi, Raj. Hi. Relax. Academy underscore Vaishnavi underscore CLAT है. अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है चैनल, it will happen for some time, guys. Just manage. The internet here is fantastic. So, this is my Telegram channel. अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है, तो you can scan this QR code and it'll take you straight to my channel. A lot is happening and a lot will happen on the channel. So please make sure that you subscribe to my channel today because बहुत ही awesome channel है मेरा. Okay. अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. Yes, that's what I'm doing. Good morning, Ronit. Good morning. Long time, Ronit. Shreya, hello. Divyanshu, hi. Okay, Divyanshu didn't say hi, but I'm saying. Titiksha, good afternoon, Titiksha. MS, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Today we take the drug. Yes, we are taking drugs today. Not Trivanga, don't say such things. People will walk out of the class thinking that we are going to be talking about how to take drugs. Okay. In fact, I don't think people will walk out of the class. I think more people will join in that case. Anyway, अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए, once the class is over, you will get the notes. अगर आप ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको सारे जून के
Then what will you do with legal and critical? My God, again lagging. What is happening? Ooh, I like this hair. I think I'm gonna get it done. Okay. Anyway, yeah, I'm gonna get it done. Is it okay now? Why is this happening? I'm so sorry this is happening. As soon as I start saying something calm ki baat, then it starts lagging. Oh God. Okay, no problem. Let's just get started with the words. At least it'll lag and pause on the words, okay, so that you can make sentences till then. Okay, this problem might be happening and will happen for some time, and after some time it'll be all right. Titiksha, it will be all right in some time, I believe. Okay, don't you worry. Let's roll. Let's roll. God's plan. God's plan. Okay. All right. So let's get rolling and let's roll. Vedika, where are you? You haven't said anything yet. Oh, there you are. ईशांत हेलो कहाँ चले जाते हो यार तुम बीच बीच में गायब ही हो रहे हो ईशांत तुम तो पता ही नहीं चलता हो कि नहीं हो suddenly you are very active suddenly you are not at all there for some reason okay so very easy words let's get started with the easy words now trinkle and trickle both are the same okay trinkle in या trinkle down okay so basically जब बूंदें गिरती हैं raindrops I hear the pit, pit, patter of the raindrops, raindrops. I hear the buzz, buzz, buzzing of the bees. But the sounder of the best, the very, very best is to hear that God loves me. Okay, so twinkle. Okay, ट्रिंकल का मतलब होता है टू फ्लो डाउन बाय ड्रॉप्स ओके ड्रॉप्स की तरह बूंदे गिरना रेन ड्रॉप्स ओके रेन ड्रॉप्स ओके सो ट्रिकल या ट्रिंकल दोनों बोल सकते हैं ओके जनरली वी से ट्रिकल डाउन बट ट्रिंकल एज वेल वी कैन से ट्रिंकल एज वेल ओके ओके नेक्स्ट वर्ड okay anesthetic is the next word why is this happening so much I know there's lag I know and just give me some time I'm trying to fix it I know, guys, and I know it is very pissing off. It is irritating when you see it getting stuck every now and then. I understand, and I can empathize with all of you. It is disturbing, but if I could really do, yes, I think you can see and hear me. Is it fine now? अब ठीक है, ma'am. All right, thank God, hallelujah, praise the Lord. All right, so let's get started with the words finally. Okay, sentences, everyone. Let's concentrate. I think it is fine now. Anesthetic is the next word. Anesthetic का मतलब होता है कोई भी substance ऐसा substance जो induce किया जाता है मतलब किसी में डाला जाता है
इंड्यूस करता है, वो क्या इंड्यूस करता है, वो क्या पैदा करता है, उत्पन्न करता है, इनसेंसिटिविटी टू पेन। ओके, सो जब भी एनेस्थेटिक दिया जाता है किसी को, तो ये एक सब्सटेंस कहलाता है जिसके वजह से पेन की तरफ इनसेंसिटिविटी हो जाती है। ओके, सो द डॉक्टर्स व्हेन आके अगर कोई भी टीथ या टूथ निकालना होता है, या देयर इज कैविटी और समथिंग दैट दे हैव टू डू समथिंग इन योर माउथ, दे गिव यू लोकल एनेस्थीसिया। ओके, एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक, ऑल दीज आर रिलेटेड टू ड्रग्स दैट मेक यू इनसेंसिटिव टू पेन, मतलब आपको दर्द होता ही नहीं है वहां पे, ठीक है, जहां पर आपको एनेस्थीसिया दिया गया। ओके, I know, Sahil. I'm getting good at it. I'm getting excellent at. Um, See, there I go. I tried to say something excellent in Hindi, but no. Base, base तो होना ही है मुझे. Okay. Resistant. Next word is resistant. Resistant मतलब refusal to accept or comply with something. Okay. तो आप किसी चीज में resistance दिखा रहे हैं. Okay. जैसी आप कोई चीज में रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, मतलब आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहे हो। ओके, सो यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट समथिंग दैट इज शोइंग रेजिस्टेंस। ओके, या कंप्लाई करने से मना कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली लेट्स से आपको बोला गया कि क्लैट के लिए आपको लेट्स से अनअकैडमी से ही पढ़ना है। ओके, अनअकैडमी से ही पढ़ना है क्लैट के लिए, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं नहीं मैं कहीं और से पढ़ूंगा। ओके, सो आप क्या कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस दिखा रहे हो टू दी एडवाइस। ओके, सो टू दी एडवाइस आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस दिखा रहे हो। ओके, एडवर्स भी हमने पहले देखा है। एडवर्स बहुत इजी वर्ड है। एडवर्स इफेक्ट हम जनरली यूज करते हैं। एडवर्स के साथ कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम हमेशा, adverse effects of something। okay, okay, so adverse effects is basically, adverse का मतलब क्या हुआ, ये adjective हो गया, तो effect is definitely a noun, ऐसी ही placement होता है, right, adjective and then noun। okay, so adverse is preventing success or development, harmful, unfavorable। okay, adverse मतलब कोई चीज का development जो रोक रहा है। okay, that is a sort of having an adverse um, इम्पैक्ट ऑन समथिंग। ओके, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन समथिंग, अगर कोई चीज क्या कर रहा है, किसी चीज की सक्सेस को रोक रहा है। ओके, या डेवलपमेंट को रोक रहा है। ओके, तो या डेवलपमेंट में रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ओके, या इट इज हार्मफुल। ओके, या तो इट इज सिंपली हार्मफुल। ओके, या इट इज सिंपली अनफेवरेबल, मतलब इसको फेवर नहीं किया जा सकता। दोज आर ऑल द कंडीशंस दैट आर कॉल्ड एडवर्स। All right, moving on to the next word, acute है next word। acute भी हमने पहले किया है, acuity। okay, so acute is not a cute girl। okay, so acute is adjective जिसका मतलब होता है, again this is adverse, acute, both are adjectives। तो acute का मतलब क्या होता है, often unpleasant or unwelcome situation or phenomena। अगर हम unpleasant और unwelcome situation के लिए यूज करते हैं, तो present or experience to a severe or intense degree। okay, severe। okay, so basically कोई चीज जो हमें नहीं चाहिए, okay, जो हमें नहीं चाहिए वो बहुत ज्यादा सिवियर डिग्री तक है। okay, so for example acute acute pollution। okay, so or acute air pollution or acute light pollution। okay, so that means we do not want this to be here, but it is here, and it is here uh, with great intensity or with great degree। okay, तो बहुत ज्यादा है, severe है, that is acute। okay, acute problem, acute trouble, acute conditions हम generally ऐसे use करते हैं। okay, कल्प्रिट किसको कहते हैं, कल्प्रिट जो पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ क्राइम और अदर मिसडीड। ओके, कल्प्रिट मतलब जिसने क्राइम किया है। ओके, या कोई भी बुरे काम जिसने किया है। ओके, तो उसको हम कल्प्रिट कहते हैं। ओके, सो दिस पर्सन इज द कल्प्रिट। ओके, catch hold of him, he is the culprit। okay, so culprit is the person responsible for a crime। okay, so that becomes the culprit। नेक्स्ट इज फ्लैग्ड। ओके, फ्लैग्ड भी हमने बहुत बारी किया है, बहुत ही ज्यादा बारी किया। ओके, टू मार्क और आइडेंटिफाई विथ और एज इफ विथ अ फ्लैग। ओके, सो बेसिकली किसी चीज को फ्लैग करना मतलब किसी चीज को मार्क करना होता है। ओके,
this document was flagged मतलब this document was marked, okay. और इन केस ऑफ सर्टन पॉलिसी, अगर कोई पॉलिसी फ्लैग हो रही है मतलब उस पे उसको मार्क किया जा रहा है, उसको स्पेसिफिकली दिखाया जा रहा है कि ये गलत है, ओके। और किसी बेसिकली नोटेबल मार्किंग, ओके, किसी चीज में की जाती है तो दैट इज फ्लैग्ड, ओके। सो समथिंग दैट इज बीइंग फ्लैग्ड मतलब उसको मार्क किया जा रहा है, ओके। सो टू मार्क और आइडेंटिफाई विथ और एज इफ विथ अ फ्लैग, ओके, दैट इज फ्लैग्ड। वर्ब फॉर्म है। कंटैमिनेटेड इज एन एडजेक्टिव, ईडी आ रहा है फिर भी यहां पर फ्लैग्ड ईडी आ रहा है तो वर्ब है, यहां पर कंटैमिनेटेड विथ ईडी इज एन एडजेक्टिव, ओके। सो इट इज एन एडजेक्टिव, ओके। कंटैमिनेशन इज द नाउन फॉर्म, इज द नाउन फॉर्म, ओके। TION जैसे ही आ जाता है वैसे ही वो नाउन हो जाता है, राइट। So contamination, and contaminated is the adjective form. So having been made impure by exposure to or additional of poisonous or polluting substance, okay, polluting substance या poisonous substance के से क्या कर देना, impure कर देना, किसी चीज की अशुद्धि कर देना। ओके, सो किसी चीज की अशुद्धि कर देना बाय एक्सपोजर, ओके। और टू एडिशन, ओके, या तो उसको उस माहौल में बेसिकली पॉइजनस सब्सटेंस वाले माहौल में उसको रख देना, या पॉइजनस चीजें ऐड कर देना, या पोल्यूटिंग सब्सटेंस ऐड कर देना, ओके। तो बहुत टाइम से ये चीज हो रही है कि कैसे मिल्क इज बीइंग कंटैमिनेटेड और अडल्टरेटेड, ओके, कंटैमिनेटेड और अडल्टरेटेड, ओके। सो कंटैमिनेट होना मतलब किसी पॉइजनस चीज से उसका उसमें मिल जाना या घुल जाना या उसको एक्सपोज कर देना किसी कंटैमिनेटेड चीज से, ओके। सो अडल्टरेशन इज बेसिकली harmful substance का mixture करना, but it is not always poisonous, okay. So but contamination is always poisonous, okay, or polluting, okay. Violation, next word is violation, देखो TION आ गया, again it is a noun, an action that breaks or acts against something, especially a law, agreement, principle or something that should be treated with respect, ओके। तो वायलेशन कोई ऐसी चीज को बेसिकली उसके अगेंस्ट जाना जिसको या तो वो लॉ है, या तो वो कोई अग्रीमेंट है, या तो वो कोई प्रिंसिपल है, तो उसके अगेंस्ट चले जाना, या तो जो जनरली जिस चीज को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं उसके अगेंस्ट उसको रिस्पेक्ट नहीं देना, ओके। सो दैट इज वायलेशन, ओके। So violation of the penal code or violation of the agreement, violation of the principle, violation of something, 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 violation of a custom, tradition, okay. So violation. Customary, okay. Speaking of custom, customary adjective form hai, okay. It basically means something that is done according to customs or or usual practices, okay, associated with particular society, place or set of circumstances, okay. So customary मतलब किसी जगह का या किसी place का या किसी certain सेक्शन ऑफ पीपल का, ओके। क्या होता है ये ये एक रिचुअल होता है या समथिंग दैट इज अ यूजुअल प्रैक्टिस, ओके। सो इट इज कस्टमरी टू bow down and touch your parents feet or your elders feet on holy, okay. So that is customary, okay. So the words that we did was twinkle, aesthetic, resistance, adverse, acute, culprit, flagged, contaminated, violation, and customary. All right, let's look at the sentences now. Up in heaven dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. To buy a new phone, I give an aesthetic to my ex. Now I have God, Nishita, I am shocked as to how your brain works. Okay, in order to buy a new iPhone, okay, Nishita, in order to buy a new iPhone, I gave anesthetic, okay, anesthetic injection or something, okay, or I induced anesthetic uh,
I gave anesthetic to my ex, and now I have an iPhone. Yay. An iPhone, okay? I आ रहा है तो an iPhone, okay? I think my brain is resisting my bright future. Very nice, Mehak. Good job. Divyanshu, I am resisting my parents' advice. यहाँ पर advice ADVICE होगा Divyanshu, okay, not SE. Shreya, ADH hormone is released only in adverse situations. Very nice, very nice. Shreya, good job, Truranga. Girl. Okay, girl might feel a little sick when you come around from the come down of anesthetic. Okay, you might feel a little sick or agitated. Actually, you feel very irritated when you are coming down of anesthetics. Okay, or anesthesia. Very nice, Triranga. I am adversing cutting the jungle. No, I'm adverse. I have adverse opinion towards cutting down of trees. Okay, Divyanshu, good job. I will never resist. I will never resist होना चाहिए the idea of having momos. Very, I can never resist the idea of having momos. Very nice, Nishita. Yes, my lord. He is the culprit. Very nice, Shreya. Good job. Mehak, again, Biparjoy. Okay, Biparjoy is taking an adverse turn. Very nice, Mehak. Good job. Ishant, those stars coming from your eyes cannot break my resistance. Oh my God. What? Stars coming out of your eyes. Okay, Ishant, good job. Vedika, I try to be resistant to suggestions given to me by others. So इतना lengthy नहीं करना है Vedika. You can just simply say I try to resist. I try to be resistant to advice given by others. Okay, others regarding my life. Okay, so to me by someone, you don't have to mention it because it is obvious. Okay, uh, good job, Dhananjay. Many people adverse me when I start my CLAT preparation. Many people were had adverse ideas when I started my CLAT preparation. Okay. All right. Why everyone has an acute X? या अक्यूट बन जाता है पहले जब बॉयफ्रेंड रहता है या गर्लफ्रेंड रहते हैं तब क्यूट रहते हैं बट एज सून एज दे बिकम एक्स दे बिकम अक्यूट अक्यूट ट्रबल ओके all right, Divyanshu, in Delhi, there is acute air pollution. Very nice, Divyanshu. Good job, finally. Ashrita, the trinkle of ghee on butter or butter makes food delicious. Very nice. A trinkle, okay, a trinkle. You can say a trinkle, not the trinkle, okay? Very nice, Ashrita. Good job. Divyanshu, my lord, is proved. It is proved that he is the culprit. Very nice, Divyanshu. Heaven, I was driving my car on a highway while feeling drugged, and I thought I was going under the speed limit, but got pulled over by a cop, and he said it is a speeding violation because my speed is 300 kilometers per hour. How did he manage to stop you, pull you? uh, I don't. Very nice, Simon. Good job. Shreya, you would have just passed by him like, no, that's it. Okay, Shreya, drinking contaminated. Good job, Hivan. Good job. Drinking contaminated water is like inviting a disease. Very nice, Shreya. Good job. Sahil, adverse effects of tooth cavity made him resistant to have a chocolate because he was experiencing acute pain in his tooth. It all started when he had a bucket of ice cream trickling from his lips. Very nice, Sahil. Awesome, awesome, awesome. Good situation that you created. Although the last sentence थोड़ा सा जबरदस्ती का लग रहा था, but trickling down his lips was also correct. Okay, so good framing of the entire situation. Very nice. The trickle of rain gives an aroma of soil. Yes, good job, Vedika. Pluviophile कहते हैं ना उन लोग को जो लोग को
No, pluviophile is just someone who loves rain. Okay, is a lover of rain, right? I think so. Pluviophile. But what is the smell called? It is called something. I read it in Verity as well. How did anyone like Verity? I mean, but anyway, I mean, it's a nice book. It's interesting, but what is it called? It is called something. I'm forgetting. What is the smell of the rain called? It is called something. Remind me, you guys, remind me. You are culprit because you have not realized the law that is killing X is not a crime. Okay, you are the culprit because you don't realize that law, law of killing your ex, okay, is not a crime. You don't realize that killing of your ex is not a crime, okay? I just killed my ex. Oh my God. I had no idea. Okay. All right. So Shreya, I flagged the notices at the road. I flagged the notices at the road. I flagged the notice on the pole, okay, or on the board, okay. Good job. Flagged मतलब किसी चीज को mark कर देना, okay. Flagging something is marking something, okay. So his visa did not get approved as he was flagged, okay, as he was flagged, okay. His visa did not get approved as he was flagged. All right. uh, Mehak, due to the cyclone, there's an acute shortage of electricity in the affected areas of the country. Very nice, Mehak. Good job. Nowadays, milk is contaminated. Okay, good job, Divyanshu. Good job. Ashrita, after flood, the drinking water got contaminated. Okay, good job. Um, yes, adulteration is just milawat. Absolutely correct, Alpesh. Thank you. Ashrita, I drove the scooty without license and police stopped me and charged me with a fine of 1,000 rupees for violating rules. Very nice, Ashrita. Proud of you. Good sentence. Okay. Um, Suchita, the current tense situation of Manipur because of violent activities have adverse impact on local community. The current tense situation, okay, a tense situation of Manipur is because of violent activities, is यहाँ पर missing है Suchita. The sentence is fine otherwise. Good job. He violated the traffic rules, that's why he is in jail. Very nice. uh Seema Puri in Delhi is an acute area because the city is full of garbage everywhere. Yes, very nice, Vedika. Good job, Divyanshu. They isn't treat her with respect. They don't treat her. यहाँ पर isn't नहीं आना चाहिए. They don't treat her with respect. It is a violation of her right to equality. Sentence बहुत सही था दिव्यांशु. बस थोड़े थोड़े silly mistakes हैं that can be rectified. Okay, good job, Divyanshu. Nishita, to contaminate yourself, you have to drink one vodka. To intoxicate yourself, you have to drink vodka, but not to contaminate yourself. Okay. Ishant, the eagle's cute eyes saw my barbecue and quickly stole the raw chicken wings that I had prepared for the barbecue. Very nice, Ishant. Good job. I was the state topper. I would like to think it is topper. Uh, Topper in the LAPD while investigating. Okay, state topper, right? Or trooper. Oh, anyway, LAPD. Okay, again, LA. Investigating a case of homicide, we found a clue that the culprit was hiding in a hood. But ladies and gentlemen, we got him. Very nice one. We got him. Good job. When I went to my ex wedding, she was
Rita, are you a guy? She was trickling down in tears as her husband come to know the reality of her that she is a demon. My God. Okay. So demon से शादी हो रही है. Good job. And you dated a demon. Very nice. ठीक है. I flagged my language, but why are you shouting, Rita? When you write everything in capital letters, it's actually, I have to read it like this, okay? When I went to my ex-wedding. Sorry for the increase sound. Sorry. I flagged my luggage with a bookmark having my name on it. Very nice, Vedika. Tagged would be a better one. Okay, यहाँ पर. Um, isn't no Ishan. Some someone broke his heart. Who was the culprit? Very nice, Triranga. आज sentences बहुत awesome नहीं आ रहे आज त्रिरंगा से. क्या बात है त्रिरंगा? I am resistant to household chores. Very nice, Shreya. So was I. So was I, girl. But you understand you have to do it. करना तो है ही भाई. Alpesh? Oh, no, 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 no. Okay. Dhananjay, when harmful liquid flowed and mixed with water, when it contaminated the water. Dhananjay, harmful liquid flowed and mixed with water and contaminated it. Okay. Sometimes customary practice followed by societies can violate, यहाँ पर violates नहीं होना चाहिए, can violate or mark dominance of social status in society. Okay, Suchita, good job. All right, so let's get started with the Ritik real name. Okay, Rita is Ritik. Okay, all right. All right, so last two words, watchdog and facilitator. ये दोनों हमने पहले किया है, okay? We have done both of these words. The last two words, watchdog is to monitor, okay? Anyone who is a watchdog is a monitor, okay? So monitor a person, activity, or situation, okay? So that is a watchdog of the society, okay? So someone who monitors, okay? Monitors. किसको मॉनिटर करता है? कोई पर्सन को मॉनिटर करता है या एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, कोई सिचुएशन को मॉनिटर करता है. इट्स अ वॉच डॉग. ओके, it can be a noun as well as a verb. Okay, facilitator, a person or thing that makes an action or process easy or easier is a facilitator. All right, so these were the words for today. We had trinkle, anesthetic, resistance, adverse, acute, culprit, flag, contaminated, violation, customary, watchdog, facilitator. All right. Now, some important announcements that we have for today. That is, CLAT Assure is an assurity from our side that जब तक आपका CLAT नहीं निकलता हम आपके साथ हैं. Okay. The terms and conditions are as follows. कि you have to submit your admit card before CLAT 2024. Minimum 300 hours of watch time होना चाहिए आपके plus courses में. Should have attempted at least 10 live tests, and this is applicable on plus, that is 12 months and above. And all iconic subscription purchases, free extension will be granted of 1 year of plus subscription. Okay, free extension में आपको 1 year का plus subscription मिलेगा. अब next important scholarship mock आने वाला है July 2nd को 2 बजे, and in this mock will be based on the new pattern of mocks जिसमें हम 120 questions ही रहेंगे आपको that you have to solve in 120 minutes. Okay, so marks allocation will also question allocation will also differ from the old pattern in that case. Okay, and here you have an opportunity of winning a scholarship worth 1.25 crores. Crack CLAT. Okay, sorry. CLAT के printed mock test जिसमें 10 sectionals, 10 full length mocks, and this will be based on new pattern will be delivered right at your doorstep. ये सारे iconic
सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा आपको ये प्रिंटेड मॉक्स, और सारे 12 मंथ एंड अबव प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगा आपको ये प्रिंटेड मॉक्स, और ये आपको आपके घर पे मिलेगा प्रिंटेड मॉक्स। एंड ये इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी जून एंड से या प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से, ओके, बिकॉज द पैटर्न हैज चेंज, सो माइट टेक अ लिटिल व्हाइल, बट दिस इज हैपनिंग, ओके, सो दिस यू विल बी गेटिंग इट, ओके। अब जून का कैलेंडर में अब हमारे पास जितने भी मॉक्स बचे हैं सारे के सारे प्लस के लिए बचे हैं, okay, so plus students, please make sure that you're giving all the mocks, okay. Level up for CLAT is a foundational batch for CLAT, ALET, SLAT, LSAT. I'm at CT 2024. Anyway, sorry. I just laugh at things for no reason at all. So you can use my code Vaishnavi10 over here. You can use my code Vaishnavi10 to enroll yourself in this batch, okay, and you will get 5% flat discount on your subscription upon enrollment. Mission batch 2025 is an integrated batch for CLAT and boards, and again you can use my code Vaishnavi 10 to enroll. एस लीगल इज अ बिगिनर्स बैच। अगर आपको इस साल क्लैट नहीं देना, अगले साल क्लैट देना है, 2025 के लिए प्रेपरेशन आप आज से ही शुरू कर रहे हो, तो अगेन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच. दिस इज एन ऑसम बैच, एस लीगल, इफ यू हैव टू give CLAT next year. So you can use my code again, that is Vaishnavi10 to enroll yourself in ACE Legal. All right, safety first. Can we get started with the editorial? Let's just stay like this forever. How can I enroll in today's sectional mock? Are you a plus subscriber, Shreya? No? Let's dive in. Ooh, here on. Let's dive in. Safety first, everyone. Safety first. All right. This is the title that is given. Wearing rose-colored lenses, let's just play pretend. Wearing rose-colored lenses, pretend we never went. Let's stay like this forever. Shreya, if you're a plus subscriber, then you will see it on your platform. आपका जो login आप पोर्टल पे जाओगे, you will be able to login जब करोगे तो आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा कि जो टेस्ट है, if you want to enroll yourself or you want to take the test, you can take it from there. ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जाने से आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. Okay. India's regulators. Okay, let's get started with the conclusion. Okay, India's regulators must ensure quality and safety of drugs. Okay, तो इनको ensure करना ही करना चाहिए क्या चीज, क्वालिटी, एक तो क्वालिटी इंश्योर करना चाहिए और सेफ्टी दोनों ऑफ ड्रग्स. ओके, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रग्स एज इन नार्कोटिक्स. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट drugs as in medicinal drugs. Okay, so remember that drugs हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे yes, basically narcotic drugs होते हैं and the drugs, medicinal drugs. So we are talking about medicines. Okay, over here, report of drug manufactured in India causing severe harm and dozens of patients' death from across the world continue to trickle in. Oh, this was trickle. Trinkle and trickle. Okay, so this was trickle only. I read it as trinkle and then I'm telling you that it is similar to trickle, but it is trickle only. Okay, trickle in. Matlab it is also same drops of rain. Okay, water. Trickle in. So basically, this is the latest
being the death of two patients in Sri Lanka who were administered Indian made aesthetic drugs. Okay, so now the author is going to be talking about this, right? The author is going to be talking about कि कैसे दुनिया भर से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ऑफ पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट्स जो जिनकी हालत खराब हो गई है या जिनको हार्म पहुंचा है बाय यूजिंग इंडियन ड्रग्स। और लेटेस्ट रिपोर्ट किस चीज का, लेटेस्ट एग्जांपल किसका दिया है ऑथर ने? श्रीलंका का दिया है, जिसमें इंडियन एडमिनिस्टर्ड ड्रग्स, इंडियन मेड ड्रग्स, जो इंडिया में बना हुआ था ड्रग्स, उसको एनेस्थेटिक ड्रग था, उसको एडमिनिस्टर किया गया श्रीलंका में, जिसकी वजह से दो पेशेंट्स की जाने चली गई। ओके, all right, so now the author will explain it further. Okay, so the author is saying just last month eye drops, अब उसके पहले भी ऐसे cases, okay, so dozens, जब author पहले ही बोल दिया कि dozens of patients इससे affect हो रहे हैं, so the author is not going to stop with one example, right? The author is going to be talking about more than one examples. Okay, तो last month भी और cases बताएगा author, right? So last month ये सारे आप skim करोगे, last month eye drops manufactured in India had caused eye infection in about 30 patients and blindness in 10 in Sri Lanka. Okay, so again we are talking about Sri Lanka में और एक last month case आया था जिसमें 30 लोगों की आंखों में infection हो गया और 10 लोगों ने उनकी आंखों की रोशनी ही चली गई in Sri Lanka. Okay, last month. While anesthetic drugs made in India causing deaths are first in the recent past, eye drops causing infection, blindness, and even death were reported a few months ago in United States, with the Atlanta-based Center for Disease Control and Prevention (CDC) finding a highly drug-resistant bacteria in them. Okay, तो basically अब क्या बोला जा रहा है कि ये केस अभी ये वाला जो एनेस्थेटिक ड्रग से जो प्रॉब्लम हुई है लोगों को या डेथ्स जो हुए, ये तो बहुत रीसेंट केस है, लेकिन 2 महीने पहले, कुछ महीने पहले ये जो आई ड्रॉप्स वाले केसेस जिसमें ब्लाइंडनेस और इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, तो सीडीसी ने उसको चेक किया था, अटलांटा बेस्ड एक सेंटर है जिसने चेक किया था कि क्या प्रॉब्लम है। तो उस ड्रग में ये जो आई ड्रॉप है उसमें क्या मिल रहे हैं? ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिल रहे हैं। ओके, सो मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो दवा से जाते नहीं है। ओके, सो दोज बैक्टीरियाज आर फाउंड इन दी आई ड्रॉप्स। ओके, सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, the series of adverse reports against drug produced in India began last year when the World Health Organization linked the death of at least 70 children in Gambia from acute kidney injury to cough syrups. Okay, so अब ये जो adverse reports आ रहे हैं, okay, the series of adverse reports, मतलब जितने भी ये series of reports आ रहे हैं, बुरे reports आ रहे हैं basically, ये कब से शुरू हुआ? लास्ट ईयर से शुरू हुआ, जब WHO ने क्या किया था? लिंक किया था डेथ ऑफ 70 चिल्ड्रन इन गाम्बिया, क्यों? अक्यूट किडनी इंजरी की वजह से, टू कॉफ सिरप। और ये उनको अक्यूट किडनी इंजरी हो गई थी बाय ड्रिंकिंग द कॉफ सिरप जो that was manufactured in India. Okay, so ये केस तब से शुरू हुआ। okay, 1 साल पहले से। The culprit ingredient in the syrup was diethyl glycol and ethylene glycol, deadly chemicals used as a cheaper substitute for propylene glycol. Okay, now देखो यहाँ पर डैश जो देख रहे हो आप, आपको इससे समझ में आ रहा है कि क्या स्किम करना है और क्या नहीं पढ़ना है। ओके, सो बेसिकली द कल्प्रिट, अगर आप ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है यहां से यहां तक, ये जो लाइन है, सॉरी नॉट दिस लाइन, ये वाला जो लाइन है, डेडली केमिकल्स यूज्ड एज चीपर, ये वाला लाइन आप पढ़ भी सकते हो, स्केप भी कर सकते हो। सो बेसिकली दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जब भी दो डैश के बीच में जो इन्फॉर्मेशन रहता है, दो एम डैश के बीच में जो इन्फॉर्मेशन रहता है, वो क्या होता है? वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। सो यू कैन चूज टू रीड दैट इन्फॉर्मेशन, और आप स्किप भी कर सकते हो। दैट शुड नेवर हैव बीन फाउंड इन एनी मेडिसिन। ओके, सो बेसिकली क्या ये वाले जो कॉफ सिरप में क्या मिल रहा है? अब देखो, पहले बताया ऑथर ने आई ड्रॉप में क्या मिला। ओके, आई ड्रॉप में ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिला।
अब ये जो किडनी इंजरी जो कॉफ सिरप से हो रही है उसमें क्या मिली है, डाइथाइल ग्लाइकॉल और इथाइल ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल दोनों चीपर सब्स्टिट्यूट है किसके, मतलब प्रोपिलीन ग्लाइकॉल इज द एक्चुअल केमिकल जो यूज होना चाहिए, उसके चीपर सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं जो कभी यूज नहीं होना चाहिए था, जो कभी मेडिसिन में नहीं पाना चाहिए था. दैट इज व्हाट वाज द रीजन. ओके, soon after the death in Gambia, cough syrup made in India and containing the two deadly chemicals killed 18 children in Uzbekistan in December 2022. What happened? What happened? Again, कुछ हुआ क्या? Oh God, ये कहाँ से आ जाता है ये लड़का उठ के? ना अगर आप ऐसे बोलोगे तो मुझे देखना ही पड़ेगा. Why am I not able to see any of his messages? I did block him yesterday. कहाँ से आ जाता है? हर बार ब्लॉक करती हूँ, हर बार आ जाता है. और खुजली तो देखो पढ़ना नहीं है, बकवास करनी है. आगे करेंगे हम, यही काम है हमारा. मतलब कितना फालतू टाइम है इस इंसान के जिंदगी में. ओके, गुड जॉब. एनीवे, if you pay heed to people like this, they start acting even more. So they need attention. They are dying for attention because at home they never got attention. And that's the attention that they're looking for on social media, hiding behind a fake name and just looking for that attention over here. So they will cause a scene so that you get irritated and they get all the attention. So just ignore people like that. That is the best thing that you can do to those people, okay? Because they are dying for attention. And if you give attention, they will keep coming back for it, okay? So don't give them what they want. All right. Simply just block or ignore or just pretend that you never saw it. That's what we are supposed to be doing. Anyway, coming back to the topic, okay? In end April this year, India made cough syrup. This year, Indian made cough syrup was again in news when WHO flagged the contaminated drugs found in the Marshall Islands and Micronesia. The contamination was identified by the Australian regulator. Diethyl glycol contaminated drugs have led to at least 5 incidents of poisoning in Chennai, Mumbai, Bihar, Gurugram, and Jammu between 1972 to 2020. Just five incidents. Okay, so नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट इसी साल अभी फिर से डब्ल्यूएचओ ने फ्लैग किया कौन सा कॉफ सिरप जो डाइथाइल ग्लाइकॉल कंटामिनेटेड था. और इसको इसकी वजह से क्या हुआ है, कहाँ कहाँ, मार्शल आइलैंड्स एंड माइक्रोनेशिया में. ओके, recently again recent case the author is talking about. So all these are incidences that the author is talking about. कितने incidences हुए हैं. Okay, the author is simply talking about कितने incidences हुए हैं. Okay, अब coming to the last bit, the conduct of the Indian drug regulator ever since WHO has first raised a red flag in October last year has been on predictable lines. Okay, has been on predictable lines मतलब जैसा predicted था कि ये react करेंगे वैसे ही react किया. Even after serious violations, it gave a clean chit to company that had supplied the drugs to Gambia and then went on the offensive to fault the global health body. Okay, so this was the reaction.
अमेजिंग. ओके, सो दिस वाज द रिएक्शन जब डब्ल्यूएचओ ने पहली बार रेज किया था अक्टूबर में फ्लैग की, देखो भाई तुम्हारे ड्रग के साथ प्रॉब्लम है. ओके, तो क्या किया, जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसे ही इंडिया ने एक्ट करना शुरू किया. बेसिकली द ऑथर इज सेइंग कि इतने सीरियस वायलेशंस होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, ये जो कंपनी जो ये ड्रग मैन्युफैक्चर कर रही है उनको क्लीन चिट दे दिया, बोला जा भाई तुम सही काम कर रहे हो. ओके, एंड not only that, they blamed, they went offensive कि ये लोग offensive मतलब they are not defending themselves. Okay, they are going offensive कि WHO की ही प्रॉब्लम है. Okay, वर्ल्ड हेल्थ बॉडी, ग्लोबल हेल्थ बॉडी की प्रॉब्लम है ये. Okay, this is not problem in our drugs, there is no problem in our drugs, it is their problem. Okay, so that is going offensive. Okay, so while WHO held its ground, the drug regulator's stand was exposed. Tests result from Switzerland and Ghana confirmed the presence of toxic chemicals in cough syrup samples from Gambia. Okay, तो इन्होंने फिर भी डटे रहे, WHO फिर भी डटा रहा कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो है, आप चाहे कुछ भी कह लो प्रॉब्लम तो है. ओके, फाइनली स्विट्जरलैंड, फाइनली ड्रग रेगुलेटर्स का, ये जो ड्रग रेगुलेटर्स है इनके स्टैंड को एक्सपोज कर दिया गया. मतलब ये जो जिस चीज के लिए लड़ रहे थे कि हम सही हैं, उनको एक्सपोज कर दिया गया कि स्विट्जरलैंड से जो, और स्विट्जरलैंड से जो रिपोर्ट आया घाना के मेडिसिन में, उसमें टॉक्सिक केमिकल्स निकले हैं कॉफ सिरप में. ओके, गाम्बिया से जो आया. ऑल्सो a detailed casualty analysis, assessment by Gambia and independent investigation by Gambian Parliamentary Committee (CDC) Atlanta found a link between the death and the toxic chemicals. Okay, तो यही नहीं, उनके death भी जितने हुए हैं, all those are related to the toxic chemicals. Okay, except from except for some customary inspection, the Indian drug regulators had so far failed to institute measures to make sure drugs produced in India for export and domestic use are safe. India can continue to be तो इंडिया को क्या करना चाहिए, बेसिकली अभी तक तो फेल कर गए हैं इस मेजर में कि जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स को तो उसको पहले दे हैव टू इंश्योर दैट इट इज सेफ. ओके, दोनों चीज के लिए, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो दोनों के लिए इनको सेफ चेक करना चाहिए. ओके, इंडिया कैन कंटिन्यू टू बी द फार्मेसी ऑफ द ग्लोबल साउथ only if the regulators begin to behave like a watchdog to ensure drug safety and not as facilitator for the pharma industry. Okay, so basically the author is saying finally कि अगर इंडिया को ग्लोबल साउथ का डोमिनेंस दिखाना है फार्मेसी में, ओके, तो इंडिया को, ये इंडिया के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको बिहेव करना चाहिए एज अ चेक पॉइंट. ओके, दे हैव टू इंश्योर कि सारे ड्रग्स आर बीइंग चेक्ड एंड वेटेड प्रॉपर्ली रादर देन बिकमिंग द फैसिलिटेटर. नहीं नहीं नहीं, सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री के फैसिलिटेटर बनने से अच्छा उनको से सही होगा उनके लिए कि वो वॉच डॉग्स बन जाए. ओके, ऑफ ड्रग सेफ्टी. So this was the editorial today. What do you think the author is cut on him? Speed read. You just simply read. Don't try to comprehend. You have to simply read. जितना पढ़ोगे बस आपको आपको खुद से ध्यान देने की जरूरत नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सिंपली रीडिंग करो जैसे बचपन में करते थे. सिंपली रीडिंग, डू द सेम थिंग. कभी ना कभी तो समझ में आने लगेगा. ओके, सो व्हाट इज, देखो द ऑथर इज डेफिनेटली डिसडेन वाली फीलिंग है. ओके, डिसडेन, या यू कैन से disgust, sorry, loathing, or you can say no. The author is basically talking about कि कैसे इन्होंने इग्नोर किया है चीजों को और कैसे ये क्या कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, सीरियस वायलेशन कर रहे हैं. और जब इनको बताया भी जा रहा है तो प्रिडिक्टेबल लाइंस में एक्ट किए, मतलब उनको यही इनसे उम्मीद ही थी ऑथर को. ओके, सो बेसिकली द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कि कितना इनको इनसे ऐसी ही टाइप की उम्मीद थी. ओके, यही करना था इनसे, यही उम्मीद थी. ओके, instead of doing something like this they did went and did that. Okay, so this is something that is a serious concern, the author is saying. Okay, so issue बहुत serious है और
by. So I will delete that informative word. Yes, it is not informative, Sahil, please. भाई informative तो है ही नहीं. Okay, informative कभी नहीं होता है passages. तो editorials informative generally नहीं होते. तो यहाँ पर आप disdain, okay, disdain, loathing या dis disconcert का मतलब क्या होता है? Yes, repugnance. Yes, not concerned. Oh, sorry, disconcerted मैंने लिख दिया. Sorry, repugnance. Okay, Sahil, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. That is okay as long as you're saying. So the author is talking about और um, heavy criticism कर रहा है उनका. ठीक है, तो heavy criticism के लिए भी एक word मैंने बताया था. Okay, what was the word for heavy criticism? No, what was the word for heavy criticism? I had told you this word for when the author is being very critical. Okay, think about the word and make sure that you tell me on the group. Okay, what is the word for heavily critical when the author is heavily critical? So यहाँ पर disdain, loathsome भी कह सकते हैं. You can say repugnance as well. The author is talking about how the standards are definitely not at par. Okay, so critical, yes, but demeaning could also be the word, but not these are not the words. Heavily critical के लिए एक word मैंने बताया था, and I am looking for that word. Okay, looking for that word. Anyway, so you can also call it disparaging as well. ठीक है, disparaging भी कह सकते हैं. Acerbic, vitriolic, all these are fine, but no, the word I'm looking for, I'm still not getting it. It was something extremely excessively critical जब होते हैं तो sardonic, no, not even sardonic, something like that. Okay, anyway, but it is fine. These words are absolutely fine. The author is basically trying to
टॉक अबाउट कि कितने टाइम से कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने, कितने टाइम से ये इशू चल रहा है, कितने लोगों ने इसके वजह से प्रॉब्लमेटिक हुई है, कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ है. एंड द ऑथर इज टॉकिंग कि फाइनली कि ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके, दे डोंट शुडंट बी डूइंग दिस, इंस्टेड दे शुड बी डूइंग दैट. ओके, so that is it for today's editorial. Thank you, boys and girls, for attending the session, and thank you for being patient throughout. You guys are lovely, and I hope I really hope that you learned something today, and I will see you again for the next class. Tata, bye bye, sayonara. बाप रे, कितने हाइपर क्रिटिकल. Scathing, yes, yes, Vedika is absolutely right. Scathing, 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 scathing is the word. Yes, that's the one I was looking for. Finally, it is done and we are complete. Bye bye, everyone. Thank you. Thank you. See you in the evening. You're welcome, Alpesh. See you, Shreya. Bye bye. Thank you, Dhananjay. What do I call you? Oh, thank you, Harshika. You too, Divyanshu. Have a good day. Everyone, have an excellent day.